गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आपका ये सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कंट्री में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है फीमेल का, वो ड्रॉप हो गया है और अब वो उतने ही लेवल पर पहुंच गया जितना मेल्स का होता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है? आपको पता है, एक इन्फेंट की अगर डेथ हो जाए उसके पहले बर्थडे से पहले, तो हम मानते हैं कि वो इन्फेंट मोर्टेलिटी है। तो हम इसको पर 1000 लाइव बर्थ के हिसाब से गिनते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो जैसे 35 बच्चे मर जाते हैं पहले ही जो है साल में, तो हम कहेंगे कि हर 1000 पे अगर 35 बच्चे मर रहे हैं तो हम कहेंगे कि 35 जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चल रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है। सो अब अगर हम इसमें जेंडर बेस पर देखें तो फीमेल और मेल का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सेम हो चुका है कंट्री में। ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है ये गैप जो है वो हाईएस्ट है 2020 में। यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कुछ गवर्नमेंट ने इंटरवेंशंस भी किए हैं इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को सुधारने के लिए। जैसे मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करने को है कहा गया है कि एक्सक्लूसिवली आपने फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। फिर सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये सांस इनिशिएटिव भी चलाया गया था ताकि बच्चों में निमोनिया की प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके, ठीक किया जा सके। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, आपको पता है, वैक्सीनेशन दी जाती है अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। 30 हेल्थ कंडीशंस को जो है स्क्रीन किया जाता है अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑल्सो। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल सर्विसेज एक्ट। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होने वाला है। यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया ऑनलाइन सेफ्टी फोकस लेजिस्लेशन डिजिटल सर्विसेज एक्ट को, जिससे कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनको टाइटली रेगुलेट किया जा सकेगा। ठीक है। क्योंकि अभी ये इंटरमीडियरीज जो हैं आपके गूगल, मेटा जो आपका फेसबुक है, ट्विटर, यूट्यूब, ये अपने हिसाब से यूज़र कंटेंट को मॉडरेट करते हैं, लेकिन अब जो है उनको कुछ ईयू के लेजिस्लेशंस के हिसाब से अपने जो है मॉडरेशन करनी पड़ेगी। तो अब उसमें लिखा गया है कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट्स कहेंगी उतनी जल्दी उनको रिमूव करना पड़ेगा कंटेंट जो कि इलीगल और हार्मफुल है, और यूज़र्स को बताना पड़ेगा कि जो है इस कंटेंट को टेक डाउन इसलिए किया जा रहा है और कैसे उनकी पॉलिसी वर्क करती है। यूज़र्स को बताना पड़ेगा उनको कि कैसे जो है इनकी टेक डाउन पॉलिसी वर्क करेगी। फिर अगर कोई चैलेंज होते हैं टेक डाउन डिसीजंस को जो है प्लेटफॉर्म को, उसके लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स जो है वो की जो है वो करनी जो है कर सकेंगे रादर। ठीक है। तो डीएसए जो है वो अलाउ करेगा कि यूज़र जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सके इन प्लेटफॉर्म्स के साथ। ठीक है। सो बिगर प्लेटफॉर्म्स के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसे प्लेटफॉर्म जिनमें 45 मिलियन यूज़र्स हैं ईयू के, उनको वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन्स की कैटेगरी में डाला जा रहा है, जिनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिंजेंट जो है वो रेगुलेशंस लगेगा। ठीक है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी ऑफकोर्स ज़्यादा होगी बिग टेक कंपनीज़ की। अब एक और चीज़ है कि यूरोपियन कमीशन जो है वो डायरेक्टली इन प्रोविजंस को सुपरवाइज करेगा, ताकि ऐसा ना हो कि ये कंपनीज ईयू की किसी एक मेंबर कंट्री में तो जो है वो रिलैक्स्ड जो है तरीके से ऑपरेट करें और बाकी कंट्रीज़ में ये स्ट्रिक्ट हो जाएं। ठीक है। ताकि सारी ईयू में इस लेजिस्लेशन के प्रोविजंस को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा सके, इसलिए यूरोपियन कमीशन खुद जो है वो डायरेक्टली सुपरविजन करेगा इन प्रोविजंस की। अब जो वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल है या सर्च इंजन जो हैं, उनको अपने एल्गोरिदम्स की भी स्क्रूटनी करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और पता लग सके कि सिस्टमेटिक रिस्क जो हैं वो उसके बारे में पता लग सके। फिर प्रिवेसी के लिए भी है इसके अंदर कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जो है एडवर्टीजमेंट जो है वो ऐसे नहीं दिखाने हैं जो कि बहुत पर्सनलाइज्ड हों। ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको बहुत पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब आपके डेटा को ट्रैक किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते इस प्रोविजंस के अंदर। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। आपके इकोनॉमी के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ शुगर बन चुका है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर भी बन चुका है, ऑफ कोर्स आफ्टर ब्राज़ील। ठीक है। सो इस बार हमने लगभग 5000 लाख मेट्रिक टन जो है वो शुगर केन प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 35 लाख मिलियन टन जो है मेट्रिक टन जो है वो आपका शुगर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया गया है, और 359 लाख मेट्रिक टन शुगर जो है वो शुगर मिल्स ने प्रोड्यूस किया है। तो टारगेट जो है हमारा ऑफ कोर्स ये है कि 20% ब्लेंडिंग करें हम एथेनॉल की
बाय 2025 अंडर एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम आपको पता है 2003 में निकाला गया था गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें 10% ब्लेंडिंग टारगेट हमारा 2022 तक का है, 20% हमारा टारगेट 2030 तक का है। लेकिन इसको गवर्नमेंट ने 2030 से बढ़ाकर आगे प्रीपोन करके टारगेट को 2025-26 तक कर दिया है। एथेनॉल आपको पता है एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होता है, जिसका हाई स्टार्च कंटेंट वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे शुगर केन, मेज, व्हीट, इनमें से जो है वो इनके शुगर केन मोलासेस से खासकर फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है एथेनॉल बनाया जा सकता है। इसको पेट्रोल में, जिसको आप गैसोलीन भी कह सकते हो, उसमें मिक्स किया जाता है ताकि जो है एक तरह से रीन्यूएबल फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022। तो ऑफ कोर्स साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है कैरोलिन बर्टोजी को, मॉर्टन मेल्डल को और के बैरी शार्पलेस को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री में और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में जो है वो काम किया है। तो शार्पलेस जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लिक केमिस्ट्री में काम किया है, जिसमें मतलब एक तरह से एक ऐसी साइंस है जिसमें मॉलिक्यूल्स कैसे असेंबल होते हैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो मेल्डल और डॉक्टर शार्पलेस दोनों ने ही जो है CuAAC एक ऐसा रिएक्शन जो है वो करके दिखाया है जो कि आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ, आपके सिर्फ जनरल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो क्लिक केमिस्ट्री होता क्या है? क्लिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि वैसे अगर आप एटम्स को जब रिएक्ट कराओगे तो उसके जो है कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए आप क्या करते हो कि आप मॉलिक्यूल्स को जल्दी से जल्दी आप क्विकली और एफिशिएंटली स्नैप कर सकते हो, इकट्ठे मिला सकते हो। ठीक है, लाइक अ क्लिक। ठीक है, तो इसीलिए हमारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम जो कार्बन एटम्स हैं अगर उनको हम आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और उसके रिएक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और उससे हमारा मटेरियल लॉस हो सकता है। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि हम छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं जो ऑलरेडी जो कार्बन के फ्रेम में आ चुके हैं, जो मेटल्स जो एटम्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं यूजिंग ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन एटम्स एज ब्रिजेस, और ताकि हमारा जो लॉस ऑफ मटेरियल ना हो और ना ही हमारे अनवांटेड साइड रिएक्शंस हो। ठीक है, इसलिए क्लिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन पार्टनरशिप। आपके जो है साइंस एंड टेक के लिए भी और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप जो है वो रिसेंटली हुआ है, जिसके जो आपको पता है कि 2030 का एक एजेंडा हमने सेटअप किया है इंडिया और US ने मिलके, US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप 2021 में अनाउंस किया गया है। तो उसमें 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम 5 पिलर्स हैं हमारे कोऑपरेशन के। पहला है पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, चौथा है सस्टेनेबल ग्रोथ और पांचवा है इमर्जिंग फ्यूल्स। तो इंडिया और US ने टास्क फोर्स भी बनाई है बायोफ्यूल्स के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक ग्रिड को कैसे स्मार्ट और स्ट्रेंथन किया जा सकता है रिन्यूएबल्स के द्वारा। गैस टास्क फोर्स बनाई है कि हम कैसे गैस बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हैं कंट्री में। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम भी बनाया गया है कि रिसर्च और मॉडलिंग कर रहे हैं जिसके ऊपर हम अलग अलग एरियाज़ में। फिर पेसर इनिशिएटिव, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव भी इसी पार्टनरशिप का एजेंडा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अपना सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट कर रहा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1996 में एक कैबिनेट डिसीजन के थ्रू बनाया गया था, 1997 में ये काम करना शुरू किया इसने, और एक PPP मॉडल पर इसको बनाया गया है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया विद इंडियन इंडस्ट्री मिलकर, ऑफकोर्स तभी ये PPP मॉडल पर है। तो एसोचैम, CII और फिक्की ने मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको एस्टैब्लिश किया है। जो इसके चेयरपर्सन होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑन द एक रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री अपॉइंट करते हैं। तो जैसे इसके पहले चेयरपर्सन कौन थे? रतन टाटा जी। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको ये। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। एक इनका इनिशिएटिव है कि आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता। इसमें हमारे इंडिया की एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि क्वालिटी की मूवमेंट है ये। लोग अपनी क्वालिटी के बारे में हम बता रहे हैं, इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि हमने क्या लैंडमार्क अचीवमेंट्स अचीव की हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंगू।
या डेंगी कहते हैं जिसको रादर, तो ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नेशनल कैपिटल में 412 डेंगी के केसेस देखे गए हैं। तो डेंगी जो है वो आपके एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, जो जिसमें फीमेल एडीज़ इजिप्शी मस्कीटो जो है वो इसमें कैरियर बनता है और ट्रांसमिट करता है लोगों को ये बीमारी को। तो मस्कीटो जो है वो किसी पर्सन के ब्लड के ऊपर फीड करता है, तो अगर वो वायरस उस पर्सन में है तो ऑफकोर्स वो डेंगी वायरस भी इस मस्कीटो में आ जाएगा और ये आगे किसी और पर्सन को ट्रांसमिट कर देगा। तो 4 तरह के डेंगी होते हैं, डेंगी 1, 2, 3, 4। जो 3 और 4 है वो जो है सबसे सिवियर हो सकता है और इसमें जो है हॉस्पिटलाइजेशन भी करनी पड़ सकती है। अगर एक स्ट्रेन से आपको अगर इन्फेक्शन हो चुकी है 1, 2, 3 या 4 से, तो आपको लाइफ टाइम उससे प्रोटेक्शन जनरली ठीक है, नॉट ऑलवेज, मिल सकती है। और ज़रूर, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डेंगी 1 से आपको प्रोटेक्शन मिल चुकी है तो डेंगी 2 या 3 या 4 नहीं होंगे, ठीक है। एक स्ट्रेन की प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही स्ट्रेन पर वैलिड होती है। तो डेंगी के जो है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है दिखाता है, 2 से 7 दिन तक ये लास्ट करता है इन्फेक्शन। हाई फीवर होता है इसमें, हेडेक, पेन बिहाइंड आइज, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वॉलन ग्लैंड्स, ये सब होता है इसके अंदर। कोई स्पेसिफिक अभी इसकी मेडिकेशन भी नहीं है, ना ही इसकी वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है। सो एडीज इजिप्शी जो है वो एक इंटरमिटेंट बाइटर है और ये एक पर्सन से ज़्यादा लोगों को बाइट करता है ऑफकोर्स ड्यूरिंग द फीडिंग पीरियड, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is female IMR. So this topic is important for your social issues. So the country's female infant mortality rate has recently dropped to same levels as that of males. So it is an important achievement for us. Now there is no gender-based discrimination in terms of IMR. So IMR has remained high for female babies than male, but the gap has reduced now since 2011. But of course, as per the SRS report recently, sample registration system report, Chhattisgarh had the highest gap in 2020. Also, first of all, you need to know what is infant mortality. So infant mortality means if an infant dies before his or her first birthday, it means that it is counted in infant mortality. So for every 1000 live births, we calculate number of infant deaths to arrive at the infant mortality rate in the country. So we even calculate it on the basis of gender, so as to see that what is the level of male infant IMR and what is the level of female IMR. Okay, so it is an important marker for the overall health of our society. There are certain interventions which have been made by the government, like the MA initiative, in which exclusive breastfeeding for first 6 months is being focused upon, and there is another SANS initiative which is being implemented since 2019, whereby childhood morbidity and mortality due to pneumonia has to be reduced. Of course, universal immunization program is being also conducted so as to provide vaccination to children against life-threatening diseases. Similarly, there is another program called Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, under which children between the ages of 0 to 18 years are screened for 30 health conditions. So the next topic is Digital Services Act. This topic is important for international relations. So European Union has recently given approval to online safety focused legislation called Digital Services Act. I think we discussed about it in April also. It's a very important act which will create a ripple effect in the entire world, and many more governments would start bringing this act also. So this act is tightly regulating the way intermediaries function in terms of moderating user content. So intermediaries are like Google, Facebook, Twitter, YouTube, etc. So first of all, they would have to remove the illegal content or harmful content fast, and they would be penalized if they do not do so. These governments would not wait for their approval from the US or their servers or their headquarters based in US. They would have to quickly take down the content which is illegal and harmful. So you know that currently what happens here in India also, that when government requests them to take down the content, these companies say that they will have to ask their headquarters in the US, and then it takes a lot of time for them to remove the harmful content. Similarly, bigger platforms will be having greater responsibility. So any platform which is having more than 45 million users in the EU, they will be considered as very large online platforms and very large online search engines. So of course they would have more stringent requirements. So
next is the direct supervision by European Commission. So as to ensure that these companies do not uh, discriminate in member states or at the member state level in the European Union, the European Commission has decided that they will be directly supervising all the provisions of this Digital Services Act in the entire EU. Okay, so it will be centrally supervised in the European Union area. So of course, for very large online platforms and very large online search engines, transparency will have to be maintained. They will have to show how their algorithms work. There will be systematic risk analysis and reduction will be there, so that accountability about the society's impact of their products can be ascertained. So users online platforms must ensure that users cannot be easily identified by the advertisers. These personalized advertisements cannot be done, which means of course minors could be targeted using personalized advertisement, so that because based upon sensitive personal data, these advertisements can be formed. This is also not done under this new act. So the next topic is largest producer of sugar in the world. So this is important under the economy section, rather in the agriculture section. India has emerged as the world's largest producer and consumer of sugar, and it has become the world's second largest exporter of sugar after Brazil now. So we produce almost 5,000 lakh metric tons of sugarcane last year, or rather during October to September period. Out of this, 35 lakh metric tons of sugar was diverted to ethanol production, and 359 lakh metric ton of sugar was produced by sugar mills. So we have also obligations under the ethanol blending program, under which 20% blending of ethanol with petrol has to be done by the year 2025. You know that Ministry of Petroleum and Natural Gas launched this program in 2003. We have a target of 10% blending of ethanol with fuel with petrol rather by 2022, and initially we had a target of 20% blending by 2030, but now recently the government has preponed that target to 2025-26. Ethanol is an agro-based product. It is produced from sugarcane, maize, wheat, etc., basically anything that has high starch content. And in India, ethanol is mainly produced from sugarcane molasses by fermentation process, and it is mixed with gasoline. Gasoline is your petrol for renewable as a renewable fuel. Okay, so the next topic is Nobel Prize in Chemistry 2022. So this topic is important for your science and tech section. So 2022 Nobel Prize in Chemistry has been awarded to Carolyn Bartozzi, Morton Meldal, and K. Barry Sharpless for their developments in click chemistry. So Sharpless was the first scientist to work on click chemistry. So and Meldal and Dr. Sharpless both have presented copper catalyzed azide alkaline cycloaddition, which is CuAAC. It's a reaction which is used in the fields like medicinal chemistry. So what is click chemistry? So click chemistry is basically generally when you have to join two atoms, it is very expensive, and it can also lead to unwanted side reactions. So what you do instead is you try to snap molecules together. Okay, so molecules are an aggregation of atoms. So instead of joining the carbon atoms, you directly go for molecule snapping of molecules quickly and efficiently, literally like a click. That is what click chemistry stands for. So instead of going for bonding carbon atoms, you go for using smaller molecules which already have a complete carbon frame. So you use oxygen or nitrogen atoms as bridges in this reaction, and you can avoid the loss of material as well as any unwanted side reaction through it. So the next topic is US-India Strategic Clean Partnership. This topic is important for our international relations. So a ministerial dialogue of US-India Strategic Clean Partnership was recently held. So this was launched in 2021 as part of the US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership, which was announced by the heads of the governments of two countries. So there are 5 pillars of cooperation here: power and energy efficiency, responsible oil and gas, renewable energy, sustainable growth, and emerging fuels. So first of all, we have this
task force on biofuels. We also are working on renewable energy so that electric grid in India can be stabilized with renewable energy. Gas task force has also been made between the two countries so that India can be made a gas-based economy. India Energy Modeling Forum has also been done. Similarly, an initiative called PACER has also been made, which is the Partnership to Advance Clean Energy Initiative. Okay, so the next topic is Quality Council of India. This topic is important for the governance section. So, Quality Council of India is set to celebrate its silver jubilee recently, and it has been celebrated at Ambedkar International Center in New Delhi. Actually, it was established in 1996 through a cabinet decision, but it actually started working in 1997. So it was set up through a PPP model as an independent autonomous organization. So with the support of Government of India, the Indian industry came forward in the form of ASSOCHAM, CII and FICCI, and they established this Quality Council of India, the chairman of which is appointed by the Prime Minister of India on the recommendation of Indian industry. So for those who do not know, the first chairperson of Quality Council of India was Mr. Ratan Tata ji. So, on behalf of the government, Department for Promotion of Industry and Internal Trade serves as the nodal ministry for QCI. They also are running a Gunvatta Se Atmanirbharta campaign, which is focusing upon India's quality, which is rather India's quality movement, and it is informing people about the relevance of quality products and quality, which is also interlinked with the quality of lives of all our citizens. So QCI is also an umbrella organization of 5 boards: NABL, NABH, NABET, NABECB, and BQP. So the next topic is dengue. So this topic is important for your social issues. So recently, a total of 412 dengue cases were reported in the national capital, and dengue is a vector-borne disease, and it is transmitted by the bite of an infected female Aedes aegypti mosquito. This mosquito becomes infected when it feeds upon the blood of a person who is already infected with this virus. So there are 4 types of dengue. There are 4 strains of dengue rather: 1, 2, 3, and 4. 3 and 4 are very severe, and they may also require hospitalization. If you get infected with any of these strains, it will be you will be lifetime protected against that particular strain only, but it is possible that you can be infected with other 3 strains. Dengue causes flu-like symptoms, and it lasts for 2 to 7 days. Currently, there is no vaccine for it, and no specific medication is available for dengue fever. Patients generally seek only medical advice, and they are advised to drink plenty of fluids. So the next topic is so Aedes aegypti is also evolved as an Aedes aegypti has evolved as an intermittent biter, and it prefers to bite more than 1% during its feeding period. Okay. So these were our topics for today. Please also download the current affairs compilation from our Telegram group. These were the weekly current affair compilation. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.